everyone. Today we will start our history portion, that is chapter 6, the Great Uprising. The Great Uprising means आपकी इंडिया कैसे ऊपर आई थी, है ना. Great Uprising. What was the changes will be done in India was done at the time of the Britishers. Okay, we have seen the problems of the Britishers. We have seen the situation of the Indians and in the previous chapter. Now we will read about the Great Uprising of Indians. So one story is given at that time in 1857. In 1857, when there was very cold morning, at that time army camp in Damdam. Damdam is a place of West Bengal where a sepoy of the Bengal native infantry was walking back to his quarter with a lota of water. है ना, एक पर्सन जा रहा था, सिपोई जा रहा था बंगाल का पानी लेके, है ना. On the way he met a Khalsi, that is labor caste who want to give him a water to drink, है ना. पानी मांगा उसने. But this was a time when a caste division is there in the Indian society. Then caste system division is very strict at that time. मतलब हम नीची कास्ट को पर्सन को हम पानी भी कैसे पिला दें, है ना, उनका ये था. So the ब्राह्मण सिपॉय जो ब्राह्मण सिपॉय था उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू गिव द वाटर टू द लो कास्ट कालसी. At that time the Khalsi was very hurt and said, "You are very proud of your caste. Wait a little. The Sahib means Britishers log, will make you a pit pellets smeared with the fat of cows and pigs." आप बहुत अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं. रुको, वेट करो. अभी जो ब्रिटिशर्स हैं वो तुम्हें पूरा ख़त्म कर डालेंगे बाय दी सीमेंट ऑफ काउस एंड पिग्स की जो चमड़े से बनी होती है, बुलेट से तुम्हें मार डालेंगे. देन वेयर विल योर कास्ट बी, कहाँ जाएगी तुम्हारी कास्ट. सो द Khalsi worked at a Dum elimination factory because he was working in that factory of the Britishers. He was referring to the new rifle and its bullets soon to be introduced in the army. Then they introduced a new rifle in the army of the Britishers. The news that bulletin of the rifle was made by, और न्यूज़ क्या थी, जो राइफल बनी हुई थी, जो उसमें बुलेटिन यूज़ की गई थी, वो किससे बनी गई थी, काऊ और पिग्स के स्किन से बनी हुई थी, है ना. सो द cow and pigs fat spread from regiment to regiment like wildfire. और हर जगह कोने से कोने आपके हर एक कमांडर ले जाके उसे हर एक प्लेस में सेल आउट किया. By the month of May, sepoys at army camps across Awadh, the place in the UP, Awadh, है ना, previous chapter we read about this place, were ready to revolt. लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए. So the first world war for independence was start to begin, and this whole chapter is depend on that only. Okay, so this was a case study when the caste division was strictly there. So how we face the situation at that time, that is given, है ना. So nextly we will start with our chapter, that is by the mid 19th century the British had established themselves as a supreme political power in India. Britishers are having a very supreme power. बहुत ज़्यादा powers Britishers के पास थी इंडिया में. Indians के पास कोई power नहीं थी. A large part of India was in the hand of British administration. Other areas were under the indirect British control. मतलब other area जो बच्चे कुछ areas थे वो भी Britishers के ही under में थे. Britishers ही उसको control कर रहे थे. These areas are acknowledged by the British supremacy, and that area was also be under in the British hand. So the Mughal Empire existed only in the names at an empire. बहादुर शाह जाफर had neither title nor power. बस ब्रिटिशर्स के पास उस समय पावर थी नहीं, उनके पास, लेकिन सारी सुप्रीमेसी, सारी पावर किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के. बहादुर शाह जाफर उस समय आपके वहाँ के किंग थे, एम्पायर उनके ही नाम का था, लेकिन उनके पास ना टाइटरी का पावर था, ना कुछ डिसीजन लेने का, एडमिनिस्ट्रेशन लेने का कोई पावर इनके पास नहीं था. सारा पावर किसका चलता था, ब्रिटिश का. So you have read in the lesson 2 that a battle of Palsi was a first major British victory in India, है ना. So first victory in India में हुई थी आपकी battle of Palsi. After that the British slowly conquered the whole India and began to systematically exploit it. In the second chapter we have read it that how the Britishers will exploit, how the many battles were fighted out by the Britishers and they were win in that fight, or they taken the territory of the Indians. So on the second chapter we have read it about that.
Nearly 100 years of the British presence in India has made all section of Indian society very unhappy. Nearly 100 साल तक आपके ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अनहैप्पी रखा, उनके ही रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो अप किया गया सोसाइटी में, सारे उन्हीं के रूल्स चलते थे. The rulers resetted the annexed section of their territory and the noblemen were angered by the loss of देयर जमींदार्स. और सारे जो नॉवेल्स में अच्छे पर्सन होते थे उनकी प्रॉपर्टी कौन ले लेता था? जमींदार्स ले लेते थे. और पीजेंट वर वेरी हर्टली एक्सप्लॉइटेटेड बाय द जमींदार्स. सो द ट्राइबल्स पीपल ऑल्सो फेयर्ड एट अ ट्रीट ऑफ देयर लाइवलीहुड. उनके पास तो खाने के लिए भी नहीं होता था. जो ट्राइबल्स लोग होते थे वो तो ये सोचते थे हम खाएंगे भी कहाँ से, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कुछ इनकम ही नहीं है. वो तो सारे लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पर डिपेंड थे और उनको लोन लेना पड़ता था, है ना. मैरिजेस के लिए अपन ने रीड किया था पहले चैप्टर में. So they were fully afraid of their situation, how they can earn their livelihood. The craftsmen were against the new economic policy which suddenly exploited them, है ना. तो लेकिन जो क्राफ्टमैन थे वो एक्सपोज होते जा रहे थे इन द कॉम्पिटिशन इन द ब्रॉड गुड्स. अब्रॉड्स में उनके गुड्स सेल नहीं किए जाते थे इंडियंस के. ब्रिटिशर्स गुड्स वर बी सेलिंग इन द मार्केट, सो दे वर ग्रेटली एक्सपोज्ड. Even the sepoys, the backbone of the British army, were very unhappy as they were treated unfairly by the British officer. Even जो sepoys थे वो भी बहुत ज़्यादा badly treat किए जाते थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, जिससे वो बहुत hurt होते थे. So the different section of the society expressed their anger through the protest and the revolt. So this different section, like sepoys were also affected, Indians were also affected by the Britishers' rule. Mughals were also affected by the Mughals' rule. So different sections of the society give the protest off against them between the 1755 and 1856. There are numerous of revolts will be taken in the country. So however, these protests were largely localized and hence the British suppressed them easily. और ब्रिटिश उनको suppressed मतलब दबा देते थे easily. हर एक कास्ट को ब्रिटिशर्स ईजिली दबा देते थे क्योंकि उनका ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता था. सो यही रीज़न था मेन कि आपने अपराइजिंग करने का सोचा, ऊपर उठने का सोचा ना. तो कॉजेस और इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल tell you what are the economic causes, why the Indians revolt against the Britishers, political causes, social causes से कैसे वो hurt हुए, religious causes are there. So many causes were, reasons were there. Causes means reasons were there why the Indians were very unhappy about the British administration. Okay.